Good afternoon to all. Welcome to class 12th economics revision class. Abhi I'm taking the revision of the banking. Although we have already covered, we have done the revision of money also. But I'm taking a very important topic in today's revision. And that is banking, right? And when we talk about the banking, we basically talk about the central bank and its functions, right? Central bank and its functions. So I'm taking out that topic today, although we have done that already, and we have to revise it for sure. So central bank and its functions. The first topic of our revision for today. अब इनमें जो questions मैं आज करवाने वाला हूँ, of course it is very important for boards. Because 6 marks का chapter है, mostly 4 marks में से इसी topic में से question आता है, central bank and its functions में से. The very first function we have already covered, currency authority. That the very first function of the commercial bank, central bank, is currency authority. That central bank has been granted a power to issue currency notes in India, except 1 rupee notes and coins, which are issued by Ministry of Finance. And other than that, all currencies in India which are legal tender money are being issued by the central bank only. Then second function, if we talk about, that is banker to government. Banker to government, which means the central bank act as a banker, an agent, and as a financial advisor to the central government. And not only to the central government, but also to the state governments. Which means bank for the general public. All these functions are ultimately being done by the central bank to the government, right? So as a banker, central bank, takes out all these activities. As a banker, central bank takes out all these activities. It maintains the current account of all cash balances also, right? Plus, whenever we have to send advances are ultimately given by the central bank only to the government, which means जैसे कि commercial bank लोगों के लिए, public के लिए काम करता है, that public can deposit its funds with commercial bank, public can takes the loans and advances from the commercial bank. Same way, same चीज RBI करता है for the central government or for the government. It also advises, वो advise भी करता है that कौन से टाइम पे कब क्या काम करना चाहिए गवर्नमेंट को. Then next is bankers, bank and supervisor. Bankers, bank and supervisor means that this for all commercial banks, and also it act as a supervisor. वो एक supervisor की तरह भी act करता है. For example, there are so many commercial banks in the country, and being it's the apex bank, the central bank ultimately act as a banker to other banks, right? It act as a bankers to other bank. And for this, it performs 3 functions, as I told you. Custodian of cash reserve. Whatever cash reserves are there in our country. Cash reserves means we are talking about the rupees also. We are talking about the foreign currency also. Whatever cash reserve is there, it is with the central bank only. Which means central bank is having the power to ultimately keep
in the custody all cash as well as foreign reserve. Lender of the last resort. Lender of the last resort means whenever commercial banks fails to meet their financial requirement from any other source, then they can approach the central bank, and central bank will definitely give them loan and also some advance as a lender of last resort, भरोसे का एक last सहारा. And third is clearing house function. Clearing house function means central bank helps to do the clearing house function also. Like all commercial banks have their accounts with the central bank. Therefore, the central bank can easily settle claims of various commercial banks. For example, अगर मुझे, if I am getting a check of my salary for suppose the check is of Axis Bank, right? But I am having my account in Punjab National Bank. तो जब वो एक्सिस बैंक का चेक मैं अपने पंजाब नेशनल बैंक में सबमिट करवाऊंगा, डिपॉजिट करवाऊंगा, तो पंजाब नेशनल बैंक उस एक्सिस बैंक के चेक को कहां भेज देगा? आरबीआई के पास भेज देगा. नाउ आरबीआई हैविंग द अकाउंट ऑफ पंजाब नेशनल आल्सो and Axis also. Then what RBI will do? RBI will deduct the amount of Axis Bank and credit that amount in the Punjab National Bank. And ultimately Punjab National Bank will give that amount to the account holder, जिसका वो check जिसके account में जाना था. So this way, settling of claims is also done by the central bank. Not only settling of claims, but I may say that clearing house function is also being done by the central bank only. तो यानी कि वो clearing house function भी perform करता है. Next, it acts as a controller of money supply. The very important question. Okay, Harshita is asking to repeat the clearing house function. Okay, Harshita, clearing house function का यहाँ मतलब है that the central bank helps in clearing house the claims also. How? For example, I am getting a salary check of Axis Bank from my employer, but I have my account opened with Punjab National Bank. What I will do? I will go to my Punjab National Bank account and I will ask my PNB Bank to kindly deposit that Axis Bank check into my account. Now what PNB will do? PNB will send that check to RBI. अब RBI के पास PNB का भी करंट अकाउंट खुला हुआ है, RBI के पास एक्सिस का भी करंट अकाउंट खुला है. RBI क्या करेगा? RBI PNB से RBI एक्सिस से अमाउंट डेबिट कर लेगा और PNB में उतना अमाउंट क्रेडिट कर देगा, ताकि PNB अल्टीमेटली अपने अकाउंट होल्डर को जिसका वो चेक था उसके अकाउंट में पैसा क्रेडिट कर सके. तो इस तरह क्लियरिंग हाउस भी करवाता है RBI, क्लेम सेटल करवाता है लोगों के RBI. Okay, Anmol is asking for the doubt. Lender of last resort. Lender of last resort, Anmol, that is भरोसे का एक last सहारा, a last help from commercial bank, from central bank, which means if any commercial bank is in trouble, and having a problem of finance, then the commercial banks can go to the central bank and can arrange the finance, can take the loan and advances from central bank. अगर commercial bank को कहीं से भी finance arrange नहीं हो पा रहा, and if they need finance, they can go to the central bank and definitely they can use the funds from there. So they can grab or they can get the loans and advances from central bank. तो कहीं ना कहीं central bank act as a lenders of last resort. कि वो commercial banks की as a lender of last resort पूरी help करता है. Now, the next is controller of money supply. Controller of money supply means how RBI controls the money. The very important function. How RBI controls the money. RBI controls the money means RBI may increase or may decrease the money supply depending upon the situation in the economy, whether the situation is of inflationary or situation is deflationary in the economy. So according to the inflationary or deflationary situation in the economy, the RBI is ultimately controlling this credit or money supply in the economy.
I already told you that inflationary. Acha, you will just going to you. I'll be asking from you people how we will see to a situation that whether it is a inflationary situation in the economy or deflationary situation in the economy. I just want to know from you people how we will come to know that whether the situation is inflationary in the economy or deflationary in the economy. Toshit, over to you, Toshit. How we will come to know whether the situation, prevailing situation in the economy is inflationary or deflationary. Yes, sir. Toshit, हाँ बोलो तोशित. Yes, बोलो तोशित. सर आवाज आ रही है? हाँ जी, बोलो बोलो. Yes, Toshit, we can listen to you. I think there is some problem with his mic that he is not able to speak, or we can't hear him. Let's move to other. Harshita, how we will come to know that whether the prevailing situation in the economy is inflationary or deflationary? Yes, sir. Sir, in inflationary situation, people have more money and they demand more. The demand in the economy is more. And in deflationary situation, people have less money and they demand less. Okay. So ultimately, we can just come to know by the way of demand that what is the nature of demand in the economy. Is the demand more in the economy or demand is less in the economy? But there is one more thing by which we can come to know whether the inflation is there in the economy or deflation. Let me ask from Anushka Bansal. So if rate is continuously rising, then it is inflationary, and when rate is continuously decreasing, then it is deflationary. Okay, that means one point can be there with the view of price, that if price in the economy is continuously increasing, that is the inflationary situation. If the prices of the products in the economy is continuously falling, that can be the deflationary situation. But one more exact explanation is there for the inflation or deflation, which we can use, that whether the condition is inflationary or deflationary. एक और condition हम ले सकते हैं इसके अंदर. मुझे वो एक exact answer नहीं मिल रहा अभी. Let's ask from Thira. Thira. Yes, Thira, you can speak. Yes, sir. So इन्फ्लेशन में जो होता है वो एम्प्लॉयमेंट और जो नेशनल आउटपुट होता है वो ज़्यादा होता है और इनकम मतलब गुड होती है, जबकि डिफ्लेशन में नेशनल इनकम कम होती है और इकोनॉमी जो होती है वो बैकवर्ड होती है. ठीक है, but I was not asking for this answer. How we will come to know, मैंने बताया भी था, how we will come to know that whether the condition is inflation or inflationary. Simple, by the way of money. If people are spending more, which means they have more money with themselves, the condition is inflationary in the economy. If people are spending less, which means they have less money with themselves, this condition is deflationary economy. अभी जो condition चल रही है, tell me whether it is inflationary or deflationary. The condition which is going on in this COVID-19 from last 2-3 months, tell me the inflation, there is inflationary condition or if this is deflationary condition. Got the answer from Anmol, Varun, Harshita, Divya, Kashish. Very good. Vaibhav, Toshit. Of course, the answer is deflationary. Priyanshi, deflationary, yes. Because people have less money with themselves. क्योंकि कमाई नहीं हो रही, कुछ इनकम कुछ नहीं हो रही. When they are earning less, they are having less money to spend. When they are having less money to spend, definitely there is deflationary condition. तभी तो गवर्नमेंट ने बजट अनाउंस किया. सोचो, डिफ्लेशनरी कंडीशन थी, लोगों के पास पैसा कम है मार्केट में, द फ्लो ऑफ मनी इन द इकोनॉमीज इज वेरी लेस. एज अ रिजल्ट गवर्नमेंट हैज टू इंट्रोड्यूस 20 लाख करोड़ पैकेज. क्यों पैकेज इंट्रोड्यूस किया? इसलिए इंट्रोड्यूस किया so that more and more money should be flown into the economy.
ज्यादा से ज्यादा मनी इकोनॉमी में देनी है हमें. That's why government introduced 20 lakhs crores package during this COVID-19 to increase the money supply in the economy, right? So one point you all have to see to it, whether the condition is inflationary or deflationary, because according to that only we are going to explain how central bank is going to, impact money supply. So ultimately you have to see to it that as a controller of money supply, what functions are being performed by the central bank. First of all, as a controller of central bank, as a controller of money supply and credit, the central bank is following the monetary policy. All right. The central bank is following the monetary policy. And in that monetary policy, in the quantitative and qualitative measures, the central bank is taking all these measures and ultimately going to control the money supply and credit from the economy. Now, first is repo rate. That how with the way of repo rate, central bank is going to take care of all this thing. Repo rate, I told you, repo rate is that rate at which central bank gives loan to commercial bank for the short term or for the short period. Yani whenever the central bank gives loans to commercial bank for the short period, that is ultimately known as the repo rate. Now tell me what will happen in case of inflation. What will happen in case of inflation in repo rate? Inflation means money supply control करने के लिए, to give less money in the economy, ताकि money लोगों तक कम रहे और वापस गवर्नमेंट के पास, बैंक के पास ज्यादा आ जाए. इन्फ्लेशन के टाइम पे रेपो रेट में क्या किया जाएगा? जस्ट टेल मी. आई गॉट द आंसर फ्रॉम वैभव शर्मा, कशिश रिजवी, तौशित, okay, Anmol, Rajan. Yes, they have given the correct answer. All of them have given the correct answer. Repo rate will of course increase. Divya also, yes, repo rate will increase. Thira, Varun, ये repo rate बढ़ेगा, because if repo rate will increase, definitely loan महंगा मिलेगा commercial bank को. Once commercial bank will get the costlier from central bank, definitely they will give costlier loan to पब्लिक. और इन्फ्लेशन में तो हम यही चाहते थे कि पैसा लोगों तक कम से कम जाए. तो डेफिनेटली जब रेट बढ़ जाएगा इंटरेस्ट का, तो रेपो रेट में ध्यान रखना है, इन्फ्लेशन अगर केस है रेपो रेट विल इंक्रीज, डिफ्लेशन है रेपो रेट विल डिक्रीज. ऑलराइट. अदरवाइज अगर आप ऐसे भी ध्यान रखो, कोई भी एलिमेंट होगा इन्फ्लेशन में, आई फॉर इन्फ्लेशन, आई फॉर इंक्रीज. कोई भी एलिमेंट होगा, डी फॉर डिफ्लेशन, डी फॉर डिक्रीज. ठीक. इन्फ्लेशन में सारी चीजें बढ़ जाएंगी, डिफ्लेशन में सारी चीजें कम हो जाएंगी. सेकंड देखिए, बैंक रेट, which is also known as discount rate. Bank rate is ultimately that rate, ये वो रेट है at which central bank gives loans to commercial bank. अरे ये तो सेम हो गया रेपो रेट की जरा, ये भी वही रेट है जिस रेट पे सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन देता है, बट फॉर लॉन्ग टर्म नीड्स और फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. यानी कि whenever central bank gives loan to commercial bank for long period of time, for long run, that is known as bank rate. All right. So tell me what will happen in the case of inflation on bank rate, और deflation में क्या होगा, inflation में क्या होगा bank rate पे? Yes, Priyanshi. Perfect. Keep on writing the answer in the chat box. It will increase, of course. Yes, in inflation it will increase, and in deflation it will decrease, because I for inflation, D for deflation. So I for increase, D for decrease. So deflation में decrease और inflation में increase, because महंगा लोन मिलेगा commercial बैंक को, वो महंगा हो जाएगी. All right. Okay. The third next is reverse repo rate. रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? अब नाउ द रिवर्स रेपो रेट मींस द रेट एट विच, अब देखो कई बार क्या होता है ना, कमर्शियल बैंक के पास कुछ फंड्स पड़े होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा फंड्स पड़े होते हैं, तो सेंट्रल बैंक कहता है कमर्शियल बैंक्स को कि आपके पास जो कुछ एक्स्ट्रा फंड्स पड़े हुए हैं, यू कैन पार्क योर एक्सेस फंड्स विद माई सेल्फ. यानी कि कमर्शियल बैंक अपने एक्स्ट्रा फंड्स को एज एन इन्वेस्टमेंट
सेंट्रल बैंक के पास जमा करवा सकता है और उसके ऊपर इंटरेस्ट अर्न कर सकता है। तो डेफिनेटली रिवर्स रेपो रेट मतलब जो इंटरेस्ट कमाएगा, द इंटरेस्ट विच द कमर्शियल बैंक विल रिसीव फ्रॉम सेंट्रल बैंक फॉर डिपॉजिटिंग इट्स और पार्किंग इट्स एक्सेस फंड्स विद सेंट्रल बैंक। तो इन्फ्लेशन में तो ऑफ कोर्स इसको भी इंक्रीज कर दिया जाएगा, क्योंकि इंक्रीज करने का मतलब है कि ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा कमर्शियल बैंक को, यानी कि वो जितना ज्यादा पैसा जमा कराएंगे सेंट्रल बैंक के पास उतना ज्यादा इंटरेस्ट कमाएंगे। और डेफिनेटली इन्फ्लेशन में तो सेंट्रल बैंक चाहता ही ये था कि पैसा ज्यादा से ज्यादा वापस आ जाए सेंट्रल बैंक के पास और वो इसके जरिए पैसा वापस आ जाएगा, राइट। सो इन्फ्लेशन में इंक्रीज एंड डिफ्लेशन में डिक्रीज। एज यू कैन सी, rise in reverse repo rate during inflation means more funds are parked by the commercial banks with the RBI to generate more interest income. Ultimately, less funds are to be used for the creation of credit by giving loan to the public, and supply of money will decrease. Ultimately, inflation will be controlled. I hope this is clear to all. Even you can explain by this chart also in exam. आप ऐसे इस चार्ट के जरिए भी एक्सप्लेन कर सकते हो जो एक क्लियर एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर सकता है हमें लोगों को, ठीक है। So after reverse repo rate we have open market operations. Now what are open market operations? As I told you that open market operation refers to the buying and selling of government securities by the central bank from or to public or commercial banks. See, जैसे इन्फ्लेशन चल रहा है, लोगों के पास काफी पैसा है, आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई अल्टीमेटली कुछ सिक्योरिटीज गवर्नमेंट के बिहाफ पे कुछ सिक्योरिटीज बेच देगा। अब जैसे ही लोगों को लगेगा कि कुछ शेयर्स बिक रहे हैं आरबीआई के थ्रू, तो उनको लगेगा आरबीआई क्योंकि ऑफ कोर्स एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो डेफिनेटली दैट विल बी गिविंग द मोस्ट सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट फॉर द पीपल। लोगों को उससे मोस्ट सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट मिलेगी, राइट। जब उनको मोस्ट सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट मिलेगी तो अल्टीमेटली उससे क्या होगा कि लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर्स खरीदना शुरू करेंगे। तो जो इन्फ्लेशन के टाइम पे पैसा आरबीआई चाहता था मेरे पास आ जाए, वो पैसा वापस आ जाएगा, राइट। सो अल्टीमेटली ड्यूरिंग इन्फ्लेशन आरबीआई स्टार्ट सेलिंग द सिक्योरिटीज, वेयर एज व्हेन वी टॉक अबाउट द इन्फ्लेशन आरबीआई स्टार्ट्स परचेजिंग द सिक्योरिटीज। तो इन्फ्लेशन के टाइम पे आरबीआई क्या करता है, आरबीआई सिक्योरिटीज को बेचना स्टार्ट कर देता है, बट व्हेन वी टॉक अबाउट ड्यूरिंग द इन्फ्लेशन आरबीआई सिक्योरिटीज को परचेज करना शुरू कर देता है डिफ्लेशन के टाइम पे। यस, इन्फ्लेशन में आरबीआई सेल करेगा सिक्योरिटीज राजन, एंड इन डिफ्लेशन आई विल परचेज द सिक्योरिटी सो दैट मनी। नेक्स्ट इज लीगल रिजर्व रेशियो और विच वी कॉल वेरिएबल रिजर्व रेशियो, जिसमें दो चीजें आती हैं, कैश रिजर्व रेशियो एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। So when we talk about the cash reserve ratio, means the part of net deposit of commercial bank which they have to keep in with central bank in the form of cash. तो ये भी बढ़ा दोगे, इन्फ्लेशन में बढ़ा दोगे ताकि ज्यादा पैसा आरबीआई के पास जमा कराना पड़े और कम से कम पैसा अवेलेबल रहे कमर्शियल बैंक के पास फॉर गिविंग लोन टू पब्लिक। एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या होगी, ये वो रेशियो अल्टीमेटली विच द commercial bank has to keep in the form of liquid assets like shares और any bonds और any debentures, ये उसको बोलते हैं हम स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये भी वही सेम चीज, इन्फ्लेशन में इंक्रीज, डिफ्लेशन में डिक्रीज। सो दीज वर दी क्वांटिटेटिव मेजर्स which are helpful in controlling inflation or deflation in the economy. Harshita, RBI purchases the securities from public only, or if commercial bank is having the securities, RBI purchases the securities from commercial bank, ताकि पैसा उनके पास ज्यादा जाए और अल्टीमेटली लोगों तक पैसा ज्यादा पहुंच सके, ठीक। So now once you people are just going to tell me the complete thing that how RBI act as a controller of credit or how RBI controls the money supply in the economy. All right, so I would like to ask from you, let me ask from Varun Bhatia, over to you. हेलो। हाँ जी, हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। बोलो वरुण, हाउ आरबीआई कंट्रोल द क्रेडिट? सर
by decreasing the LRR. पॉइंट वाइज बताओ स्टार्टिंग से. बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एक्सप्लेन प्रॉपर्ली विद ऑल पॉइंट्स. फिर ऐसे मैं कर नहीं पाऊंगा. Not revised yet. एग्जाम आने वाला है and still have not revised. खुशी. Yes, खुशी. खुशी, are you listening? Vaibhav, Yes, sir. explain the process that how central bank controls the credit through various monetary policy, various measures economy- of monetary policy. In economy, there are two situations: inflation and deflation situation. Inflation situation means in which money spent is more spent by the public to buy goods and services, whereas in deflation refers to a situation where there is less money in the economy and less used by the public to buy goods and services. So RBI can use the following tools uh, uh, to change to control the money supply and credit. So first is repo rate. Repo rate is the rate at which central bank of a country lend money to commercial banks. So by increasing the repo rate, it will inflation curbed, and by decreasing the repo rate, the deflation curbed. So second is bank rate. It is similar to repo rate. So by increasing the bank rate, the inflation curve; by decreasing the repo rate, deflation curve. And open market operations. Open market operation refers to buying and selling of government securities by the central bank. So in which purchase of government securities will deflation curve, and sale of government securities inflation curve. Reverse repo rate. Reverse repo rate is the rate at which the commercial bank park their funds to the commercial bank. So by Central bank. increasing Commercial bank park their funds to the central bank. So by increasing the reverse repo rate, inflation curbed, and by decreasing the reverse repo rate, deflation curbed. So legal reserve requirement, or LRR. So it includes CRR and SLR. So by increasing the rate of LRR, we can inflation curbed, and by decreasing the rate of LRR, deflation curbed. All right. So ultimately, we can simply say that whenever there is inflationary or deflationary situation that is prevailing in the economy, that can be curbed or that can be covered up with the help of these measures, quantitative measures by the central bank, which are ultimately bank rate, repo rate, reverse repo rate, then LRR, open market operations. But we have still one more measure to control the credit or money supply, not the margin margin requirement, which is ultimately the बात करते मार्जिन रिक्वायरमेंट्स क्या है. मार्जिन रिक्वायरमेंट्स का यहाँ पे मतलब है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई गो टू मार्केट, सपोज if I go to not market exactly, if I go to bank for taking some loan, if I go to bank for taking some loan, मैंने बैंक को बोला कि मुझे एक होम लोन चाहिए, होम लोन ऑफ रुपीज सपोज 30 lakhs, ऑल राइट, क्योंकि मुझे एक फ्लैट लेना है जिसकी कीमत है सपोज 30 lakhs, तो मैंने बैंक को बोला मुझे लोन चाहिए. बैंक ने कहा, अकॉर्डिंग टू द मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, बैंक ने कहा कि फॉर टेकिंग द लोन ऑफ 30 लाख रुपीज हम लोग आपको सपोज फ्लैट आपने 30 lakhs का लेना है, लेकिन आपको लोन मिलेगा 25 lakhs का. प्लीज लिसन टू दिस इंस्ट्रक्शन. आपने फ्लैट बाय करना है, प्रॉपर्टी बाय करनी है 30 lakhs की, लेकिन आपको लोन उस पर मिलेगा 25 lakhs का. जिसका मतलब ये है कि मोर्टगेज आपको पूरा 30 lakhs करना पड़ेगा बैंक को, बट लोन अमाउंट दैट यू विल बी गेटिंग इज ऑफ रुपीज 25 lakhs. The difference between the loan amount and that would be ultimately termed as a, उसको हम बोलेंगे क्या, that would be termed as a margin requirement.
So ultimately that would be termed as a margin requirement. उसको हम लोग margin requirement बोलने वाले हैं. तो इन्फ्लेशन के टाइम पे जब इन्फ्लेशन होगा एंड व्हेन आई नो, जब मुझे पता है इन्फ्लेशन है और अल्टीमेटली मुझे जो है पैसा मार्केट के अंदर काफी देना है, तो इन्फ्लेशन के टाइम पे अल्टीमेटली देयर विल बी मोर मार्जिन रिक्वायरमेंट. बैंक क्या करेगा, बैंक सेंट्रल बैंक को पैसा वापस लेना है लोगों से, है ना, तो बैंक ट्राई करेगा कम से कम लोन दिया जाए, जिसके लिए इन्फ्लेशन के टाइम पे व्हाट सेंट्रल बैंक इज गोइंग टू डू, central bank will ultimately do one thing, that is कि बैंक सेंट्रल बैंक जो है मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा देगा. कि अगर आपको फ्लैट लेना है 30, मुझे लगेगा कि 30 लाख का फ्लैट मैं पूरा मोर्गेज करूं, लोन मुझे सिर्फ 20 लाख मिलेगा, 10 लाख मुझे अपने पल्ले से डालना पड़ेगा, तो आई विल नॉट टेक द लोन, मैं लोन ही लेना उस टाइम पे कैंसिल कर दूंगा. तो मार्जिन रिक्वायरमेंट यहाँ पर भी इन्फ्लेशन में इंक्रीज और डिफ्लेशन में डिक्रीज हो जाती है. और मार्जिन रिक्वायरमेंट है क्या, मार्जिन रिक्वायरमेंट इज अल्टीमेटली द डिफरेंस बिटवीन द ऑफर्ड बाय द बोरोवर अगेंस्ट द लोन. ऑलराइट, आई होप इट इज क्लियर. सो दीज वर द इंस्ट्रूमेंट्स टू कंट्रोल मनी सप्लाई और क्रेडिट इन दिस सिलेबस. इसके अलावा अगर कोई आपकी बुक्स में दिया है मॉरल सुएजन या और कोई सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, दैट इज नॉट इन सिलेबस. यू हैव टू जस्ट डू दीज थिंग्स ओनली. क्या क्या, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, LRR which has a part of CRR and SLR, open market operation, these are under the quantitative measures. And when we talk about the qualitative measures, then you need to take off only one, that is margin requirements. Is it clear to all now? प्रियांशी, मार्जिन रिक्वायरमेंट मतलब अमाउंट ऑफ लोन एंड जो मोर्टगेज कर रहे हो आप सिक्योरिटी, उसका डिफरेंस. मोर्टगेज बैंक करवा रहा है 50 लाख, लोन बैंक दे रहा है 40 लाख, एक सिचुएशन. दूसरी सिचुएशन, मोर्टगेज बैंक करवा रहा है 50 लाख, लोन दे रहा है 30 लाख. अब ऑफ कोर्स दूसरी सिचुएशन में हम लोन लेना पसंद ही नहीं करेंगे, है ना, और ये दूसरी सिचुएशन इन्फ्लेशन के टाइम पर आएगी. क्लियर है यहाँ तक? सो आई थिंक इट इज क्लियर. टुमारो आई विल टेक द रिवीजन ऑफ बजट. कल बजट की रिवीजन लूंगा, फिर एक बार बजट और हो जाए उसके बाद में फिर हम लोग नेशनल इनकम को दोबारा पूरा रिवाइज कर लेंगे. सो टुमारो आई विल टेक द रिवीजन ऑफ चैप्टर बजट. Till then, please revise the topic and solve the assignment. And those who have not sent me the assignment yet, kindly send it to me by today. जिनका वो लास्ट वाला असाइनमेंट रह गया था, मुझे आज ही भेजो. I am making the final list today only. Till then, please revise the topic.